हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीखें इंग्लिश विद सारा। जिन्होंने हमें न्यूली सब्सक्राइब किया है उन सब लोगों को वेलकम टू द चैनल, और जिन्होंने अभी तक सीखें इंग्लिश विद सारा को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, करना नहीं आ रहा, उसको समझना नहीं आ रहा, और कोई भी लेवल हो, कोई भी क्लास हो, हर क्लास के स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आज हम अच्छे से सीखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। Basically, what reading comprehension means? Reading comprehension means to read the text and then comprehend. Basically, you have to read the passage, whatever passage you get in your exams or in your classroom or in your homework. You have to read that passage, you have to read that text, and then you have to comprehend it. Now, what does comprehend means? To understand mentally whatever you have read. On the screen, I have given you the definition of comprehend and the definition of reading comprehension. So you can better assess what reading comprehension means and what does comprehend means. Alright, now here we have a passage in front of us. We will read two passages in our presentation today. जो first passage है उसको हम read out करेंगे, और जैसे मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ आज के लेसन में, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स, क्लासरूम या होमवर्क में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट ना कर सकें या आपको अटेम्प्ट ना करना आए। आज का जो हमारा पैसेज है वो बेसिकली एक रिपोर्ट है। फाइन, अब रिपोर्ट जो है वो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे दी गई है, एक टेक्स्ट के तौर पे दिया गया है, और हमने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप सबसे पहले अपना टेक्स्ट खोलेंगे और उसको रीड करेंगे, और रीड आप उसको यहाँ पैराग्राफ से स्टार्ट नहीं कर देंगे। नेवर स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द पैराग्राफ. Please remember this. You always have to read its title first. Whatever the title is, whatever the question is, always start reading with the title. Comprehension में usually title तो हमने खुद suggest करना होता है, लेकिन जब भी आप reading करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना lesson जो है वो title से start करना है। और reading comprehension का जो question है उसमें हम question को सबसे पहले read करते हैं कि what the question is saying to us. यहाँ पर क्वेश्चन हमें कह रहा है, रीड दिस रिपोर्ट ऑन ऑयल और ब्लैक गोल्ड। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए कि हमारा जो आज का टेक्स्ट है वो ऑयल से रिलेटेड है और ब्लैक गोल्ड, यानी ऑयल का दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड है इस टेक्स्ट के मुताबिक। देन आंसर द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज। ऑब्वियसली हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा हम पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट कहता है, ऑयल समटाइम्स नोन एज ब्लैक गोल्ड इज अ डार्क थिक लिक्विड फाउंड अंडरग्राउंड और बीनीथ द सी। द ग्रेट ऑयल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल in the Middle East, in Texas and Mexico, were formed millions of years ago when seas covered these areas. They were created by tiny sea plants and animals dying. These sank to the seabed and were buried in mud. Over the millennia, the mud turned to stone and plants and animals were compressed by the weight of the rock on top of them and slowly turned into mineral oil.
Although we think of oil and the petrol that comes from it as a modern discovery, in fact, the Chinese discovered oil more than 2,000 years ago. They even sunk drill holes to extract it. However, it was not until the mid-19th century that the first modern type of oil well was built in the USA. Since then, the search for oil has spread all over the world. The most familiar sight on a modern oil field is the derrick, or drilling tower. This tall metal tower holds the drilling equipment. Down through the center of the tower is the drill pipe, at the bottom of which is the bit. This has sharp teeth to cut through the layers of rock above the oil deposit. Scientists examine the fragments of rock and can tell from them how near they are to the oil. Sometimes, when they reach the oil deposits, the oil gushes up in a great fountain, but more usually it has to be pumped up. Once extracted from the ground, the crude oil is pumped along pipelines to the refining plant. Here, the oil is separated into various qualities of oil, bitumen for roads, and of course, petrol. The oil is also used in the manufacture of fertilizers, medicines, plastics, and detergents. The demand for oil is increasing all the time, and scientists use the latest technology in their search for new fields. Geologists study satellite pictures of the Earth, looking for the sort of geological areas that might cover an oil field. Other specialists are looking at ways of extracting oil from a rock called shale. At the same time, engineers have built great derricks in the middle of the sea to extract oil detected there. However, all these sources of fuel are finite. They will run out eventually. So it is important to investigate other sources of energy, especially those that will not run out, such as solar power and wind power, until a suitable alternative is found. However, the search for black gold will continue. So यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो स्टेप 1 है, आपने अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, फाइन, फुल फोकस्ड रह के पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा, जो स्टेप 2 होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रीडिंग जो है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। अब स्टेप 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने हमेशा याद रखना है वो ये है कि आपने सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ना है, आपने क्वेश्चंस को पहले नहीं पढ़ना। अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे और टेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, देन ये एक आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल लगे। ऑलवेज रिमेंबर टू रीड द टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। जो हमारी कंट्री पाकिस्तान में ज़्यादातर पैटर्न चलता है वो ये चलता है कि आपको टेक्स्ट दे दिया जाता है और स्ट्रेट अवे 5 क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, फाइन। दूसरा जो एक हमारे पास पैटर्न होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या अमेरिका में हम देखते हैं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पैटर्न यूज़ होता है, वो आपके सामने है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चंस को ABCD में डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीपल MCQs बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ से करेक्ट जो चॉइस होती है, जो करेक्ट आंसर होता है, उसको सेलेक्ट करना होता है। सो सबसे पहले हम अटेम्प्ट आज करेंगे, हम दोनों तरीक़ों से करना सीखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी और वी विल लर्न कि हमने अगर MCQs टाइप का पैटर्न आता है तो उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का है, ऑयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ऑयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अभी हमने पढ़ा है अपने टेक्स्ट के अंदर। ऑलराइट, A vegetables, B marble, C tiny sea plants and animals, or D rocks. So what would be the answer? Yes, C
tiny sea plants and animals. So C will be the correct answer. इसको आप circle कर दीजिए, underline कर दीजिए. Question 2. What is the technical name of drilling water? Is it twist, derrick, specialist, or source of energy? Yes, it's B, derrick. Good. Question number 3. Oil is also known as, 4 options हैं आपके पास, white gold, diamond, silver और black gold. अभी आप टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं, टाइटल में, क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. आपको पता, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड येस, द आंसर इज डी, द ब्लैक गोल्ड. Question number 4. The energy sources that will not run out are solar power and wind power, electric power and manpower, C, hydroelectric power, or D, mechanical power. What will be the right answer? Yes, A, solar power and wind power. Very good. Bravo. All right. अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 जो है वो थोड़ा चेंज्ड फॉर्मेट में है. यहाँ पर MCQs नहीं गिवन, बल्कि आपने खुद टेक्स्ट में से आंसर को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है, ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? व्हेन ऑयल इज़ फाउंड, हाउ इट यूजुअली कम टू द सर्फेस. बहुत इसका ईजी सा आंसर है जो हमने पढ़ा कि ऑयल जो है जब वो फाइंड किया जा चुका होता है तो उसको हम सरफेस पर कैसे लाते हैं. सो आपने, अगर आप श्योर नहीं है कि आपने वर्डिंग क्या लिखनी है, तो आप वापस अपने टेक्स्ट पर जाएं और वहाँ पर ढूंढें इसको कि क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है. Yes, so I found the answer. अब आपने क्वेश्चन को और आंसर, क्वेश्चन में से आपने आंसर बनाना है. ऑलराइट, आंसर आपने क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट करना है और इसका जो आंसर यहाँ पर है वो ये है, it usually it has to be pumped up. Now let's see, हमें आंसर मिल गया है. अब हम देखते हैं चल के कि हमारा जो क्वेश्चन है what is it asking from us. Okay, it says when oil is found, how it usually come to the surface. So हम यहाँ पर लिखेंगे when oil is found, it usually pumped up to the surface. ठीक है? Full stop. So, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि why do you think oil is called black gold? So if you are not sure about the answer, what you can do is that you can go back to the text. I will just recall whatever I have read. So it says oil, sometimes known as black gold, is a dark thick liquid found underground or beneath the sea. Okay, found underground or beneath the sea. So, why do you think oil is called black gold? So, we can write the answer like oil is called black gold because it is a thick liquid found underground or beneath, N-E-A-T-H, the ground. All right, so here I'm going to put the line over here. Fine. So what is our answer? Our answer is oil is called black gold. अब ये मैंने कहाँ से आंसर बनाया? मैंने क्वेश्चन में से आंसर बनाया. मेक श्योर दैट आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में से बनना चाहिए. ओके, क्वेश्चन वॉज व्हाई डू यू थिंक दैट ऑयल इज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड. You will make your answer from the question like oil is called black gold because.
because you remember that I was not a bit sure what to write in this question. So I went back to my text, I referred to my text, and then I came up with the answer. So same is the procedure which you guys will do in your paper, in your classwork, or in your homework. Okay, so oil is called black gold because it is a thick liquid found underground or beneath the ground. Here it is. हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 1 डन हो गया है. वी हैव डन इट वेरी इजीली. सुपर इजी था और सुपर क्विक भी था, लेकिन इसके कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं. और मैं जो आपको रूल्स बता रही हूँ, जो तरीका, जो मेथड बता रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का, वो टेस्टेड है. लाइक मेरे स्टूडेंट्स पर आई हैव टेस्टेड दिस मेथड ऑन माई स्टूडेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि ये फ़ायदेमंद है. ओके, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टेक्स्ट. द नेक्स्ट टेक्स्ट इज द लेपर्ड एंड द ज़ेब्रा. One bright sunny day on the Serengeti plains, a zebra was walking under a tree to cool down. All of a sudden, the zebra heard a terrible noise from the branches of the baobab tree above him. He looked up and saw a leopard. Feeling scared, the zebra didn't know what to do. He seemed to be frozen in a place, but he could move. The leopard said, "Can you please help me down? I'm stuck in this tree and I'm too afraid to get down." "Do you promise you won't eat me if I help you?" asked the zebra. "Yes," said the leopard. "Okay, here is the plan," said the zebra. "You gently jump onto my back and then I will kneel down and you will walk off my back." "That's a great idea," said the leopard. So the zebra stood under the branch where the leopard was. The leopard gently jumped down onto the zebra. Then after getting onto the ground, the leopard said, "Thank you so much. I promise that will repay you one day." The next evening, when the sky was turning dark and the moon was rising in the sky, the zebra was eating grass on the plain. He was so busy eating that he didn't notice the lion who was preparing to attack the zebra, but leopard was observing all this from a distance. Remembering the kindness the zebra showed him, the leopard quickly and furiously ran to chase the lion away. The lion saw the leopard coming and quickly ran away in the opposite direction. The zebra was joyful that he was saved from the fierce lion. "Thank you so much, you saved my life." In response, the leopard said, "I told you that I would repay your kindness one day." From that day onwards, the zebra and the leopard were glad to be best friends. Fine. Question आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. आपने सबसे पहले टेक्स्ट को अच्छे तरीके से रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, और द नेक्स्ट स्टेप इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. और ये वो वाला पैटर्न है जिसका मैंने शुरू में आपके साथ स्टार्ट में जिक्र किया था कि 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आ सकते हैं. लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी एजुकेशन स्टाइल है, उसमें जो सिस्टम है पाकिस्तान एजुकेशन, उसमें जो पैटर्न है वो यूजुअली जो होता है स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने है, व्हाई वाज द ज़ेब्रा स्केयर्ड टू हेल्प अ लायन. अब अगर मैं टेक्स्ट नहीं भी पढ़ती तो मेरे माइंड में है, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से टेक्स्ट को रीड किया है, गो थ्रू किया है, सो मैं इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकती हूँ. Why was the zebra scared to help a leopard? He was scared to help the leopard because he was thinking that he might attack him or he can eat him. Okay? Number B क्या है? How did zebra help the leopard? How did zebra help the leopard? अब आपने क्या करना है कि आपने गो थ्रू करना है, मेरी इस वीडियो को देखें और साथ साथ आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. अपनी रफ नोटबुक्स पे कीजिए या आप कमेंट सेक्शन में भी इसको अटेम्प्ट करके मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई और आपको इससे फ़ायदा हुआ. मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे लिख कर भेजेंगे. सो आंसर क्वेश्चन है, हाउ डिड ज़ेब्रा हेल्प द लेपर्ड. अब आपने खुद इसको कॉम्प्रिहेंड करना है टेक्स्ट से.
Okay, number C. Why leopard quickly helped the zebra when it was in danger? मुझे तो आंसर पता है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लेपर्ड सेव द ज़ेब्रा's लाइफ? फाइन, सो ये क्वेश्चंस हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपने उनका आंसर हमें बताना है, लिखना है कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड आप उसको कैसे करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा आपके अपने थॉट और आपकी अपनी ओपिनियन पर बेस करता है। फॉर एग्जाम्पल ई क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 हमारे पास है, विच मॉरल डू यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन स्टोरी? कि जो आपको स्टोरी दी गई द लेपर्ड एंड द ज़ेब्रा की, उसमें क्या मॉरल लेसन आपने सीखा? आपके मुताबिक आपकी ओपिनियन क्या है? क्योंकि इससे टीचर को पता चलता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द टेक्स्ट या रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करने की जो आपकी स्किल है वो किस हद तक डेवलप हुई है। ऑल राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट टेक्स्ट पर बेस करते हैं। ऑल राइट, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने टेक्स्ट निकाला, अगर आप श्योर नहीं है वर्डिंग्स टेक्स्ट में से निकालें और उसको आंसर में लिखना शुरू कर दें। फाइन, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज़ टोटली आप कह सकते हैं कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, आपकी अपनी ओपिनियन पर बेस करता है, आपकी अपनी कॉम्प्रिहेंड करने के तरीके पर बेस करता है, और यहीं से हम टीचर्स को पता चलता है कि आपको कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल जो है वो किस हद तक डेवलप हो चुकी है। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। आई होप कि आज का लेसन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर जो बेस करता था वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डेली रूटीन में ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक कोई सा भी पैराग्राफ लीजिए, उसको रीड कीजिए, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, मैगज़ीन्स को पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़ को सुनें, ऑल राइट, ताकि आपकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हों और आप जो राइटिंग स्किल है, कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट को या जो भी आप सुनते हैं उसको करने की जो स्किल है वो भी साथ साथ डेवलप होती रहे। कमेंट्स में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के लेसन के हवाले से, आपको कैसा लगा, किस हद तक आपको समझ आई। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको ज़रूर अटेंड करूं और आपको उसका आंसर दूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो और चैनल दोनों को शेयर भी कीजिए और बेल बटन को ज़रूर स्मैश कीजिए, ज़रूर हिट कीजिए ताकि सीखे इंग्लिश विद सारा की जानिब से हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे। सी यू।